Morning class, welcome to the next lecture of financial markets. So in the previous lecture आपने पढ़ा था about effect of rise in domestic interest rate as a result of increasing expected inflation. So basically looked at how does change in money supply affect domestic interest rates, ठीक है? And obviously that interest rate in turn affects the expected inflation. और फिर इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है उस पर क्या असर पड़ता है ठीक है सो यू बेसिकली स्टडी दैट and now in this lecture I would like to go through concept called exchange rate overshooting ठीक है तो exchange rate overshooting को समझने के लिए ज़रूरी है that we first try to understand something which is called monetary neutrality ठीक है मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या है बेसिकली इट्स अ प्रोपोजिशन इन मॉनेटरी थ्योरी ठीक है मॉनेटरी थ्योरी का एक हिस्सा है और मॉनेटरी न्यूट्रलिटी सिंपली ये कहता है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो दैट विल लीड टू एन इक्वल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ठीक है यानी कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करती है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है लेट्स से वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है बाय 1% ठीक है so अगर money supply increases by 1%, then according to the theory of monetary neutrality, there will also be an increase in price level which will be equal to 1%. ठीक है यानी कि according to theory of monetary neutrality, 1% rise in money supply increases price by 1% point as well. ठीक है यानी कि 1% अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो 1% प्राइस भी बढ़ेगी ठीक है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मॉनेटरी न्यूट्रलिटी ठीक है इसके बारे में यू कैन जस्ट इमेजिन let's suppose for example okay, government announces overnight that an old dollar वो आप अज्यूम कर ले पाकिस्तानी करेंसी डॉलर है ठीक है सो गवर्नमेंट ओवरनाइट अनाउंस करती है कि जो पुराना डॉलर है इट विल नाउ बी इक्वल टू 100 न्यू डॉलर्स ठीक है यानी कि आज से जो पहले वाला डॉलर है वो जो नए डॉलर्स आ रहे हैं मार्केट में उसका रेट ऐसा होगा दैट वन ओल्ड डॉलर विल बी इक्वल टू 100 न्यू डॉलर्स ठीक है तो इफ यू लुक एट मनी सप्लाई में क्या असर पड़ेगा अगर इस तरह की पॉलिसी आए the money supply in the new dollars would be 100 times its old value and the price level would also be 100 times ठीक है तो ऐसा अगर हो जाए कि ओल्ड डॉलर इज इक्वल टू 100 न्यू डॉलर्स ठीक है यानी कि एक पुराना $1 जो है वो आज के या नए $100 के बराबर है ठीक है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो यू कैन सी दैट क्या होता है बेसिकली मनी सप्लाई increase करेगी ठीक है it will be actually 100 times the old value at the same time price level will also increase ठीक है बट आपकी जो रियल मनी सप्लाई इट विल रिमेन अनचेंज ठीक है बिकॉज वो क्या रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी अगर आपकी मनी सप्लाई इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज एट द सेम टाइम प्राइस इज आल्सो गोइंग मनी सप्लाई और प्राइस अगर दोनों बढ़ेंगी तो इट विल नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट द इकोनॉमी आपका रियल मनी सप्लाई सेम रहेगा इसके अलावा अदर indicators like आपका जो nominal interest rate and real interest rate they would also remain the same so I hope आपको पता है कि real और nominal interest rate में क्या फर्क होता है you already stated that so monetary neutrality basically tells us that in the long run the rise in money supply would not lead to a change in domestic interest rate ठीक है अच्छा तो हमने अभी तक क्या बात की बेसिकली हमने कहा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मॉनेटरी न्यूट्रलिटी अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो दैट आल्सो लीड्स टू एन इक्वल इंक्रीज इन प्राइस लेवल तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा प्राइस भी उतना ही इंक्रीज करेगी तो इट विल नॉट चेंज एनीथिंग इन द इकोनॉमी रियल मनी सप्लाई सेम रहेगी उसके अलावा जो आपके रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हैं दे विल आल्सो रिमेन सेम
अब आपका इंटरेस्ट रेट सेम कैसे रहेगा उसको हम देखते हैं ग्राफिकली। तो बेसिकली होता है क्या इन द शॉर्ट रन, क्या होता है अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाए तो व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फॉल्स। ठीक है, इसको और तरीके से दे सकते हैं। A rise in money supply leads to a higher domestic price। तो ठीक है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो it basically increases prices which leads to a lower expected future exchange rate। ठीक है, because of that आपका जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है इट बेसिकली फॉल्स। ठीक है, जब आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट कम होगा, ठीक है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो व्हाट विल हैपन इज it will lead to a decrease in expected return on डॉलर डिपॉजिट्स। बेसिकली हो क्या रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा इट विल लीड टू a lower domestic interest rate। Lower domestic interest basically means what? A lower expected return on dollars। तो जब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर्स कम होगी तो व्हाट हैपेंस, इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, यानी कि जो आपके डॉलर के एसेट्स हैं या डॉलर डिपॉजिट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। सो अगेन अ लोअर expected return on dollar means a decrease in demand of dollar assets। So in this graph अगर आप देखें D1 shows the demand before a decrease in relative expected return on dollar assets। तो जब expected return on dollar assets डिक्रीज करती है तो आपका D1 कर्व जो है it decreases and moves लेफ्टवर्ड। सो D1 जो है वो गिर के D2 तक आ जाता है। D1 shifts लेफ्टवर्ड, D1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा and it will be equal to D2। तो आपको बता रहा है एक्सचेंज रेट भी फॉल करेगा फ्रॉम E1 टू E2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या हो रहा है कि आपकी अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो इट इज गोइंग टू लीड टू अ लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स, और उसकी वजह से जो डॉलर एसेट्स हैं उनकी डिमांड D1 से गिर के D2 हो जाएगी। बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होगा, इन द लॉन्ग रन आपका जो इंटरेस्ट रेट है इट विल मूव बैक फ्रॉम द पॉइंट इट वाज व्हेन डिमांड वाज D2। ठीक है, जब डिमांड D2 है उस वक्त, जब डिमांड D2 है और एक्सचेंज रेट E2 है, उस वक्त जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करेगा एंड इट विल इंक्रीज टू द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलेंट एट डिमांड E3 एंड एक्सचेंज रेट E3। ठीक है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंटरेस्ट रेट जो है इट विल बी स्टिल लेस देन व्हाट इट वाज एट डिमांड D1। ठीक है, और इसी तरह जो आपका एक्सचेंज रेट है E3 इट विल स्टिल बी लेस देन एक्सचेंज रेट ऑफ E1। ठीक है, सो
ठीक है, इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए कि आपका जो एक्सचेंज रेट है और वो अगेन इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इन द शॉर्ट रन ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड कम होने की वजह से डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा और टाइम दें तो दैट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बैक अप एंड इट विल गो टू इट्स प्रीवियस। सो इन द लॉन्ग रन जो है मनी सप्लाई चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। Interest rate only changes in the short run because of a change of money supply. Again, शॉर्ट रन में मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज कर जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता। बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इट राइजेस बैक अप। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक्सचेंज रेट को देखें इन द लॉन्ग रन आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी इतना डिक्रीज नहीं करता है। बेसिकली होता क्या है, डिमांड जब D1 से D2 हो रही है इन द शॉर्ट रन तो आपका एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम पॉइंट E1 टू पॉइंट E2, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा और टाइम दें और देखें व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज फ्रॉम E2 टू E3, ठीक है। सो इन द शॉर्ट रन एक्सचेंज रेट ज़्यादा फॉल करता है, इट फॉल्स फ्रॉम E1 टू E2, ठीक है। दिस इज E1 एंड दिस इज E2, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट इज फॉलिंग फ्रॉम E1 टू E2 इन द शॉर्ट रन, ठीक है। बट इन द लॉन्ग रन क्या होता है, आपका एक्सचेंज रेट जो वापस ऊपर E3 पे आ जाता है, ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन जो एक्सचेंज रेट चेंज है वो कम होता है, एक्सचेंज रेट ओनली फॉल्स फ्रॉम E1 to E3, ठीक है, विच इज अ स्मॉलर चेंज, ठीक है। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग, ठीक है। एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग क्या है, द फिनोमिनन वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर इन व्हिच एक्सचेंज रेट फॉल्स बाय मोर इन द शॉर्ट रन than it does in the long run when money supply increases is called exchange rate overshooting। एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग का सिंपली मतलब ये है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो शॉर्ट रन में ज़्यादा गिरता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग रन, बिकॉज लॉन्ग रन में थोड़ा ऊपर वापस आ जाता है। सो अगेन एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग says that the exchange rate falls more in the short run when money supply increases as compared to the long run, because in the long run the exchange rate does not fall by as much because of an increase in money supply, ठीक है। So this is phenomenon of exchange rate overshooting। I think that should be all for this lecture। So next we'll just read some of the applications, ठीक है। थोड़ी रीडिंग करेंगे और दी एप्लीकेशंस ऑफ जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर, and that will be the end of this chapter। Alright, thank you guys।